The next question is कि भाई सर ये recovery of arrears of land revenue का क्या मतलब? So when Britishers were ruling India, जो उनके पास source of income होता था, वो source of income होता था land revenue. So they used to tax agricultural land. Whoever did not pay the taxes of the Britishers, उसके लिए severe penalty थी. और severe penalty ऐसी थी कि 8 things can be done against him for non-payment of the land revenue simultaneously. It was so a strong provision. पूरे इंडिया में जितने भी लैंड रेवेन्यू कोड्स में आज भी वो प्रोविजंस जो कॉलोनियल प्रोविजंस है, आज भी वही प्रोविजंस है, रिमेंबर. सो एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू जैसे बोल दिया, मुझे तो लगता है ये ड्रैकोनियन प्रोविजंस है एक्चुअली, बट देन दिस इज द लॉ ऑफ द लैंड अंडर द लैंड रेवेन्यू कोड. अब यू विल आस्क कि सर ये क्या चीजें हैं, 8 चीजें जो कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर कर सकता है. और सबसे नंबर 1 है, let us take example of Uttar Pradesh. So in Uttar Pradesh land revenue code, 8 things which the revenue officer or district collector can do to recover electricity whatever amount is due, और जो भी लैंड रेवेन्यू, आप इसको ये समझिए जनरल में कि हमने पहले भी जब लैंड एक्विजिशन की बात करी थी तो फर्स्ट चार्ज किस चीज को रखा था? फर्स्ट चार्ज हमने रखा था लैंड टैक्सेस को. और उसका रीजन क्या था? फर्स्ट चार्ज के लिए लैंड टैक्स जब भी हम ड्यू डिलिजेंस करते हैं तो उसका अमाउंट अगर छोटा भी हो तब भी हम उसको इग्नोर नहीं करते, चाहे उसका 100 रुपए भी अमाउंट है, देन ऑल्सो वी डोंट इग्नोर इट एक्चुअली. उसका रीजन मैं आपको आज बताने वाला हूं कि क्यों इग्नोर नहीं करते हैं. उसको ये इसलिए इग्नोर नहीं करते हैं कि फॉर रिकवरिंग दैट 100 रुपीज 8 actions can be taken against the company or against the individual simultaneously. And what are the 8 actions which can be taken against the company or the individual? First action is, if we take example of UP, and similar provisions are there across India. Under UP Land Revenue Code section 171 में arrest and detention. अब आप एक चीज इमेजिन करिए कि आपका अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू जो टैक्स है वो है बहुत स्मॉल अमाउंट, 1000 रुपीज है, and somebody comes and deputy collector comes and issues a notice for arrest and detention. It is a civil detention, but then it will be very difficult. बोलेगा 100 रुपए के लिए, 1000 रुपए के लिए he is taking that action. So that is why in due diligence report that has to be highlighted actually, and that has to be paid. Number 1. Second is second step, and इसमें क्या है, ये ऐसा नहीं है स्टेप्स एक के बाद एक लेंगे, ये 8 स्टेप्स एक साथ ले सकता है बंदा, एक साथ अथॉरिटी है इनके पास. Second is by attachment and sale of movable property. So if somebody does not pay arrears of land revenue अगर नहीं पे करते हैं तो अटैचमेंट हो सकता है प्रॉपर्टी का और सेल हो सकता है साथ में. अरेस्ट डिटेंशन हो गया नंबर 1, दोनों साथ में भी कर सकते हैं. इफ यू सी यूपी लैंड रेवेन्यू कोड तो इट इज अंडर सेक्शन 170. थर्ड, attachment of bank account and lockers. Under section 173 the bank accounts and lockers can be attached. You imagine a small due in Uttar Pradesh of maybe 1000 2000 rupees, and the company's bank account is being attached. It will be very difficult for everyone actually. Fourth, by attachment of other holdings. So it is not like this if land tax of one property is not paid, so other holdings can also be attached. So maybe 20 parcels of land a solar company has acquired or a power company has acquired. In one parcel of land, there is some unpaid, dues. When the attachment order comes, it comes for all the parcels of land. These are the powers under section 174. Next is by lease of holdings. So the deputy collector and collector also have power to give those premises on lease to somebody else. You are thinking that these premises belong to me, a power plant is running, and suddenly you find that somebody else is taken on lease. Next is sale of holdings. So if there are unpaid arrears of land revenue, then the holdings can also be sold. Attachment of sale of other properties of the owner. So under section 175,
Other properties of the owners can also be attached. So there is an office there is a headquarters of a solar company in maybe Delhi, and suddenly you find that has been attached by the UP government because of this provision. Next is appointment of receiver. So under section 178, there can be appointment of receiver by the collector and deputy collector to recover that amount. इसीलिए जब भी कोई चीज अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू बनती है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है. इसीलिए जब हम लोग एनकम्बरेंस की बात करते हैं तो उस एनकम्बरेंस में अगर लैंड टैक्स आता है या लैंड रेवेन्यू आती है, लैंड टैक्स आता है, तो उसको बड़ा सीरियसली लिया जाता है, क्योंकि जब तक एक्शन नहीं ले रही है एडमिनिस्ट्रेशन तब तक कोई दिक्कत नहीं है. बट व्हेन द एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड्स कि दे वांट टू टेक एक्शन फॉर अ लैंड रेवेन्यू, दीज आर द 8 थिंग्स दे कैन डू साइमल्टेनियसली एक्चुअली. सो दे कैन do arrest and detention of the directors, they can do attachment of movable properties, they can do attachment of bank accounts and lockers, they can do attachments of holdings, they can lease out the holding, they can sell the holdings, they can attachment and sale of other properties of the owner. So company के other properties है उनको attach कर दिया, फिर they can appoint a receiver. So these 8 steps can be taken together. That is how this encumbrance becomes very important, and your question was wonderful to understand recovery of arrears of land. So sometimes when we are doing due diligence and senior management of the solar company says कि यार ये 2-4 हजार की बात है, ये लैंड रेवेन्यू को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो आप लोग, या फिर इसको आप क्यों बोल रहे हो कि ये शुड बी पेड बाय द प्रीवियस ओनर, जितना लैंड रेवेन्यू नो ड्यूज आप दे दीजिए. This is the reason why we insist on that, and you can also explain it to your now seniors that payment of land tax, it is the first priority actually.